Hello guys, welcome to Minutes to CLAT, and this is Anmol Jalan, your English educator from the platform. चाची जी एक बार वहां लाइट जला दीजिए ना प्लीज तुम्हें जला Hello everyone, welcome to the session. Am I live? Please confirm, am I audible, visible to everyone? Please confirm, am I audible, visible to everyone? Okay, so perfect. How are you all doing and how's everything going? Good afternoon, a very good afternoon, everyone. Happy Vijayadashmi to everyone. I hope you all also clear CLAT and have all the Vijayas in your life, right? So, wishing you good luck, lots of success in your life. Chalo. So, today we are having a weekly round of a vocabulary from newspaper. What are we going to
Good going, ma'am. But as days are approaching, anxiety is elevating. It's okay. No need to be anxious. If you will get anxious, obviously you will make mistakes, right? So instead of being anxious, you need to be calm and composed and just keep on practicing. Nothing else has to be done, right? Whatever your teachers are guiding you, just follow that and keep practicing, right? So anxiety की कोई बात ही नहीं है. चलो, what are we going to do this in the session? See, ये एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है. और एग्जाम्स के वक्त पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना इज वेरी वेरी कॉमन. और इस टाइम में वर्ड्स भूलना और ज्यादा कॉमन हो जाता है, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू लाइक एवरी वीक फॉर यू ऑल, कि जितने भी एडिटोरियल्स आएंगे द हिंदू के, ठीक है, वी विल टेक दैट, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के, उसमें से कुछ एडिटोरियल्स आई ब्रिंग इट हियर, उसमें से कुछ वर्ड्स कर लेंगे हम लोग, और साथ में I'll give you some words जो बहुत important लगेंगे, right? I'll provide you with some important words, okay? That will rather help you in getting good synonyms, antonyms, meanings, ठीक है? So that the words which are very common in CLAT and they are from newspapers would be revised, right? So weekly roundup session में we are going to do that only, okay? चलो. So moving ahead, a very good announcement for you all also, that 12 Minutes to CLAT is organizing its first Educators Aspirants meetup on October 19, 2024 in Delhi. Okay, the address venue is given: YMCA Auditorium, YMCA Sports Hall, Hanuman Road area, Connaught Place. Okay, so what are we going to do here? We will be having a discussion on last month's strategy session. ये जो anxiety वाली feeling है, इसको थोड़ी भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? You will see all your favorite educators from the platform there, ठीक है? एडुकेटर्स के एक्सरसाइज सेशंस होंगे, करंट अफेयर्स का क्विज होगा, आफ्टर क्लैट काउंसलिंग गाइड होगी, एंड ऑब्वियसली विल हैव बेस्ट आउट ऑफ मॉक सेशंस. एंड ऑब्वियसली अब इतनी दूर से आ रहे हो तो सम हाइट ही तो बनती है, राइट? सो सी यू ऑल देयर on 19th of October from 2:30 p.m. Okay. Now, coming ahead, so this is मैम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे क्या इंग्लिश की अभी? यस बेटा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो वोकैबुलरी भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही होगी. क्वेश्चंस प्लस लास्ट में आई विल प्रोवाइडिंग यू अ बूस्टर, लाइक कुछ वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बार बार भूल सकते हो, उन्हें डिस्कस कर लेंगे हम लोग. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन. बिकॉज सी, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी एंड वोकैबुलरी में बहुत डिफरेंस हो जाता है, राइट? अगर आपको वोकैबुलरी करनी है और आपको कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी करनी है, तो दे टू आर वाइडली डिफरेंट, राइट? मैंने हमेशा कहा है, व्हाट यू पीपल मेक मिस्टेक इज ऑलवेज while finding the meaning of it, आपको सबसे पहले दिमाग में था, अच्छा ओके, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, आई टिक इट, बट आंसर गलत हो जाता है, बिकॉज आपसे क्लैट के पैसेजेस में कंटेक्चुअल मीनिंग पूछी जाती है और ना कि वर्ड मीनिंग या लिटरल मीनिंग. अंडरस्टूड? सो कंटेक्चुअल मीनिंग के लिए कुछ टिप्स हैं. ओके, रिमेंबर दैट बिफोर रीडिंग दिस पैसेज, रिमेंबर सम टिप्स दैट यू ऑल ऑलवेज नीड टू रीड द सेंटेंस एंड वर्ड quite nicely, okay, when you are going for answering context based questions. आई बात समझ में? और it's always better कि आप उससे एक पहली वाली लाइन और एक बाद वाली लाइन, ये दो लाइन जरूर रीड कर लो. अंडरस्टूड? हेलो मातंगी, अर्चिता, रिफत, आयुष, दिवांश. मैम, at this stage what shall we be good mock score after 6 months of preparation? See, there is no actually a perfect score, okay? But now at least you should be scoring, if you 50 60s at least, this is the least I'm saying, okay? If you're below that also it's fine, if you're above that it's very good, okay? But if you are stuck in 50 60s, जो generally average score होते हैं बच्चों के, I'll suggest you to just start giving mocks daily. मतलब बोलोगे मैम क्या ही mocks daily दे, हमने अभी तक आपको कहा था हर सब्जेक्ट के सेक्शंस दो, राइट? सो नाउ यू कैन स्टार्ट एटलीस्ट अल्टरनेटिव, तो आप सारे सेक्शंस अलग अलग देने की जगह यू कैन जस्ट कंबाइन देम एंड गिव अ मॉक काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, कि 2 घंटे बैठ के मैं सारे सेक्शंस एक एक सॉल्व कर लेता हूँ. अंडरस्टूड? उससे क्या होगा कि जो पैटर्न है ना क्लैट की, वो आपके लिए बहुत क्लियर होती जाएगी. योर ब्रेन विल बी वेरी मच addicted to that particular pattern of sitting 2 hours and attempting all the passages one by one, one by one, one by one. Understood? So that helps a lot. Okay, understood? So you can start with that, and trust me, that will help you a lot. Now, talking about very recent news here.
That says nearly a year after his election, Maldives President Mohammad Muizi made his first bilateral visit to Delhi, seen as an attempt to mend fences with Delhi. India was not his first bilateral destination. A tradition leaders of friendly neighboring countries observe although Mr. Muizu and Prime Minister Narendra Modi met friendly at a summit in the UAE December 2023 and he attended Mr. Modi's swearing in June. Can you tell me what is the part of speech of the word attended? What is the part of speech of the word attended? Come on. Then we'll move. And please focus on the highlighted words. We have questions based on that, okay? What is the meaning of the word attended? Sorry, part of speech of the word attended. Very good verb. I have told you very simple techniques of identification. If it is ed, okay, then obviously more chances of it to be verb. Secondly, if it has been talking about an action performed by a noun or a pronoun, and here it is noun or a pronoun, right? He is pronoun, so he attended. Obviously, it goes to the verb. Very good, everyone. So tensions between India and Maldives were originally a consequence of Mr. Mizu's presidential campaign that was built on the position of India's India Out campaign. Next came a controversy that pitched tourism in Lakshadweep as an alternative to the Maldives, following criticism of Mr. Modi by Maldivian minister that led to the boycott Maldives campaign of India. Mr. Muizu's decision to travel to Turkey, China, and the UAE before he came to India also rankled. Even as Mr. Muizu said he would pursue Maldives' first policy critics in New Delhi grew concerned over Mail's economic initiatives and defense pact with China. Amidst the change in regimes in Bangladesh and Sri Lanka, India has been under some fire over its neighborhood first policy, further fueled by this perceived distancing from the Maldives. As Mr. Modi and Mr. Muzu held their first from formal bilateral negotiations, some of the work in smoothing their path had been done. After India acceded to Mr. Muzi's demand that India's troops stationed in the Maldives since 2012 for aircraft maintenance be replaced by technical personnel, both sides turned course with the foreign ministers exchanging visits and new joint projects being announced. India's decision to extend $100 million in SBI subscriptions of Maldivian T-bills enabled Mail to make its debt service payments at a time it was in danger of defaulting. Mr. Muzi has also softened his rhetoric and sacked the ministers who were critical of Mr. Modi. Now tell me here, highlighted words तो आपने देख लिए, ठीक है? We'll be having questions on it. Please tell me what is the part of speech of the word mm, wait. Okay, chalo. Now tell me what is the part of speech of campaigner? Part of speech of the word campaign here. Come on. What is the part of speech of the word campaign here? Adjective, noun, noun, noun. Very good. The correct answer here is noun only because see, Lakshadweep as an alternative to Maldives following criticism of Mr. Modi by Maldivian minister that led to boycott Maldives campaign. So it is obviously a campaign that is being run about, right? A campaign that is being run around. So a name given to a campaign, event or anything is obviously what? Noun, correct? Very good, very good. Okay, so ready for the questions? Chalo, let's move. Also, we have our VARCHASVA batch crash course for CLAT and AILET already launched. If you're still very doubtful about your preparation or having or facing problem in solving questions, नहीं समझ में आ रहा है, proper guidance नहीं मिल रही and you want to attempt CLAT 2025, here is the go-to course, VARCHASVA batch, which is just recently launched only and you can surely join it for all your CLAT problems. And also we have launched our 2-year batch, Parcham. Anyone who's is currently in class 11
and wants to appear for CLAT in 2026, here is a batch for you all. Now, coming to the questions. In the passage, the word bilateral is used multiple times to describe certain meetings or visits. What does bilateral most closely mean in this context? Come on. Kunika, you can surely visit our website or check on the links given below. No, but this is not a session of 1 hour. We are going to have this session for around 30-35 minutes. Involving two political groups within the same country, concerning two sides or countries, open to multiple countries, limited to internal affairs. Very good. The correct answer obviously is B, concerning two sides or country. Bilateral, bi means only two, right? Bi means two. So bilateral obviously involves two things. It can be anything. ठीक है, कोई भी दो चीजें हो सकती थी. So it can be two political groups also. But here we are talking about bilateral visits, right? So bilateral visits between two countries that is being taking place. That is India and Maldives, right? So here comes concerning two sides or countries. Am I clear? Next. The word mend fences is used to describe the aim of President Muizu's visit to Delhi. What does mend fences most likely mean? Repair damage infrastructure, resolve conflicts or improve relations, avoid interaction, emphasize or divide. Again, very good. The correct answer here is again B, resolving conflicts or improving relations. See, if we go for just the text meaning or literal meaning, repairing damaged infrastructure could also be incorrect, right? Mending fences का मतलब ये भी हो सकता है, अगर आप infrastructure repair कर रहे हो तो उसे भी आप mend fences कह सकते हैं. But here Mr. Muzu has visited India for resolving conflict that happened between India and आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था. Everyone boycotted Maldives and obviously Maldives India का बहुत अच्छा tourist destination. You all know that lots of Indians have been traveling to right Maldives lately, right? And Maldives obviously has important concerns for India because अगर वहां से customers नहीं आ रहे तो they are going to severely face some losses in their economic balance, right? Correct? Right, correct. Very good. Next question. In the context of the passage, the phrase rankled most closely means upsetting memory, caused resentment or irritation, brought relief, arose suspicion. Come on. In the context of the passage, the phrase rankled most closely means. Okay, some are saying D, some are saying B, some have also said C. Okay. If we hear rankled can be remembered with the word as having same pronunciation as रांकल्स ऐसा लगता है ना, कुछ मुस जाना जिसे हिंदी में कहते हैं, राइट? रांकल, रिंकल्स आ जाने, राइट? सेम एज रिंकल, रांकल्ड. ओके, सिमिलर साउंड है ना? एक्चुअली अपसेटिंग मेमोरी इज ऑल्सो लिटरल मीनिंग एंड इट इज करेक्ट वर्ड ऑल्सो. ठीक है, अपसेटिंग मेमोरी एक बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है रैंकर्ड की. ठीक है, arose suspicion and brought relief both are wrong, but option A and B both are correct. upsetting memory भी उसका meaning होता है, causing resentment और irritation भी उसका meaning होता है, right? but यहाँ पे अगर contextually देखेंगे तो the word was used here. If you see that UAE before he came to India also rankled, right? so यहाँ पे ये rankled का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, that it caused what, resentment and irritation. Understood? It caused what? Am I clear? Sorry. So the correct answer is B, cause resentment or irritation. Okay. Understood why not C? Brought relief is not at all the correct answer. It is opposite in meaning. Okay. Next. The word accede is used in the context of India's response to Mr. Muir's demand. What does accede mean here? Reject, support cautiously, agree to or comply with, negotiate formally. Come on, tell me. Jaldi se.
कमान जल्दी से बता दो. India acceded to Mr. Muse's demands. Okay, very good. I have got intelligent audience today. The correct answer obviously here is C, agree to or comply with. Because India ने सोचा कि अब वो हाथ बढ़ा रहे हैं तो we should also accept, right? तो agreeing to or complying with whatever norms and rules they had set. Okay? और जितना भी उनका पोर्ट जो भी उनके डिमांड्स है वॉट एवर वर द टॉक्स, ठीक है, इंडिया ने असीड किया है. ठीक है, इंडिया का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव रहा है. नेक्स्ट. ओके, हियर कम्स द सेकंड पैसेज फॉर द डे. With the support of four independents, the National Conference, Congress, CPIM, India Bloc Alliance in Jammu and Kashmir has now got the endorsement of 53 of the 90 MLAs in the newly elected assembly. This should be a boost for Chief Minister designate Omar Abdullah of the NC as he embarks upon the tough path of fulfilling promises made to the electorate in the Union territory. The India Bloc faced many odds in this election, such as the fragmented party system in the valley, with multiple contenders, the challenge by the Bharatiya Janata Party that went on to consolidate its base in Jammu and sought to use the delimitation exercise to manufacture majority support and a wary electorate, possibly disenchanted with the lack of statehood, local representation, and normal politics ever since the erstwhile state was bifurcated and its special status diluted. But the enthusiastic electorate had a clear message. In the valley, the India bloc has chosen decisively over rituals who include independence fielded by banned Jamaati Islami, the National Conference steadfast moderation to Kashmiri autonomy and the rights of the citizens in the erstwhile state, the Congress message of reconciliation and support towards restoration of statehood, and the popularity of Jammu and Kashmir's lone leftist and long-time legislature Mohammad Yusuf Tarigmani helped the alliance reap the lion's share of seats in the valley and win in reserved seats in Jammu and Kashmir with a respectable vote share across regions and communities. Hello, ma'am. I am giving CLAT. So, do I need to do Jan to May? Beta, I didn't get your point. Like, what are you asking for Jan to May? Current affairs or what is the case? If so, how important? And yes, Divyansh, this is Jammu and Kashmir elections only, and this is obviously very important as a current affair topic also for you, all right? Okay, so मूविंग टू द क्वेश्चन से पहले मुझे बताओगे व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन हियर. कम ऑन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच और द वर्ड रिप्रेजेंटेशन हियर. कम ऑन टेल मी. Support and a wary electorate, possibly disenchanted with the local of state lack of statehood, local representation, and normal politics ever since the erstwhile. Come on. What is the part of speech of the word representation here? Is it a noun, pronoun, adjective, or an adverb? Is it a noun, pronoun, adjective, or an adverb? Come on. You will get very good. Aha. It's not at all adjective here. We are talking about local representation, like a group, right? We are mentioning about a group. Local representation यहाँ पे लोगों को दिखा रहा है, right? Locally जो वहाँ represent कर रहे थे. So local representation here obviously means what? Noun, not adverb. Adverb के लिए मैंने पहले क्या बताया है? Adverb are words which define or tell you more about a verb, another adverb or an adjective. तो उसके पीछे पहले वाला word या तो verb होना चाहिए, adverb होना चाहिए या फिर another adjective होना चाहिए for the word to be adverb. Understood? छोटी सी ट्रिक है, बहुत बहुत हेल्प करती है. पहले वाला या बाद वाला वर्ड देखो. अगर पहले या बाद वाले वर्ड verb है और वो verb के बारे में बता रहा है,
राइट, तब इट कैन बी एडवर्ब। अगर वो दूसरे एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं तब वो एडवर्ब हो सकता है, या फिर वो किसी और एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं तो वो एडवर्ब हो सकता है। एलवाई वर्ड्स हैं तो वो एडवर्ब हो सकता है। दिस आर स्मॉल टेक्निक्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। नाउ एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रीट फास्ट? What is the meaning of the word street fast? Anyone? कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में 500 स्पीच रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। प्रिया, जल्दी से बताओ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रीट फास्ट? नो गूगल गूगल, हाँ। What do you mean by the word street fast? Anyone? Come on, come on. Groundbreaking. Okay, some steadfast moderation is something when you are very faithful and loyal, or you can say when you're very steady. Steadfast is steady, याद रखोगे, ठीक है। मतलब आप अपनी बातों से हिलने वाले नहीं हो, you are very loyal to something. Steadfast person is someone who is very devoted, okay, very devoted to his or own personal belief or cause, and that is called as steadfast. Understood? Steadfast का मतलब क्या है? Am I clear with it? Okay. Steadfast is very devoted or loyal to something. Okay, steadfast is very devoted or loyal to something. Can you tell me what is the meaning of the word erstwhile? Give me the meaning of the word erstwhile. Come on. Erstwhile. ये वर्ड बहुत बार आपके क्लैट के passages में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है. What is since the erstwhile state was bifurcated? Not existing anymore? No, not at all. Erstwhile means former. ठीक है, मतलब इससे पहले. Okay, he is the earlier, right? Correct. Earlier former minister of India. Okay, former prime minister of. So erstwhile minister. Erstwhile मतलब पहले वाले. Understood? Former. Clear है? चलो थोड़ा क्वेश्चंस पे चलते हैं. Disenchanted describes the feeling of the electorate towards the situation. Which option is the closest in meaning? Frustrated, disillusioned or disappointed, energized and motivated, filled with gratitude. Come on. What is the answer here? Come on, tell me fatafat jaldi se. Disenchanted describes the feeling of electorate towards the situation. Which option is closest in meaning? Frustrated, disillusioned or disappointed, energized and motivated, filled with gratitude. See, both frustration and disappointed goes around in line with disenchanted. Okay, the correct meaning here is disillusioned or disappointed, because you can see how is it used. Possibly disenchanted with the lack of statehood. So very irritated, okay, disillusioned or disappointed goes for disenchanted very correctly. Next, the phrase reap the lion's share most likely means what? Accept a small portion, garner the largest part, share benefits equally, divide equally among all. Reap the lion's share. Accept a small portion, garner the largest part, share benefits equally, divide equally among all. जल्दी से बता दो. Come on, everyone. Very good. बहुत अच्छे. The correct answer is garnering the largest part. Reaping the lion's share. Lion obviously is the king of jungle, right? He will, if वो शिकार करेगा, right, he'll get the biggest share of for him, right? So garnering the largest part is called as reaping the lion's share and not dividing equally, because they यहाँ पे कि वो कैसे use हुआ था? See that help the aliens reap the lion's share of seeds. मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा seeds लेके आए हैं वो, right? They won with very good seeds there. Reaping the lion's share, therefore here is garnering the largest part. Clear? Understood? Chalo. Next. The word diluted in the passage implies that the special status was enhanced and strengthened
reduced or weakened, adulterated, rediscovered and valued. Diluted here means what? हाँ बेटा, बिल्कुल एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर सकते थे, मैंने तो क्लास में आपको अच्छे से एलिमिनेशन मेथड सिखाया भी है। सी यहाँ पे डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, किसी थिक चीज में लिक्विड मिलाना, राइट, टू जस्ट डिक्री यू कैन से थिनिंग इट, ओके। डाइल्यूट करने का मतलब किसी चीज को थिन करना होता है। तो ऑब्वियसली रीडिस्कवर्ड एंड वैल्यू तो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अडल्टरेटेड, हाँ, गोज फॉर द लिटरली करेक्ट मीनिंग। अडल्टरेशन में अगर दूध को डाइल्यूट किया जाता है तो उसे अडल्टरेट भी किया जा रहा है, करेक्ट। इनहांस एंड स्ट्रेंथन आप नहीं कर रहे बिकॉज आप कंसंट्रेट करते तो enhance and strengthen होता, right? So the correct answer therefore goes for reduced and weakened, right? Correct? It goes for reduced or weakened. Clear? Next, the term mandate in live up to this mandate most likely means what? A personal request, official support or directive, formal advice, a position from the public. Mandate का मतलब क्या है? Come on. Very good. Official support or directive is the correct answer. बहुत अच्छे. सी फॉर्मल एडवाइस भी अगर थोड़ा करेक्ट हो सकता है, बट एडवाइस इज नॉट करेक्ट, राइट। मैंडेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस मैंडेट आता है तो ऑफिशियली आता है, तो ऑफिशियली फॉर्मल चीजें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ रिक्वेस्ट, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग दैट इज इवन, दैट इज ऑफिशियल सपोर्ट और डायरेक्टिव, ठीक है ना। Here I am with some words which will be very helpful for you, जिसका synonyms, antonyms आपको जरूर पता होने चाहिए और ये words आपको नहीं भूलने हैं, okay? The first word here is, तो आज की क्लास में whatever words I am teaching you, ये आज आपका take away from the session होगा and you are going to add this in your vocabulary also, और इस तरीके से करेंगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। वारी, वारी का मतलब क्या होता है? Someone who is very cautious, एकदम वारी। Anyone who would like to tell me the meaning of vary also? फिर मुझे vary की का word meaning भी बताना चाहेगा. Like I have given the synonyms, antonyms and everything. What is the meaning of vary? Anyone? Someone who is very careful. Okay, someone who is very careful because कुछ ऐसा हुआ है, okay, he thinks कि आगे चीजें बुरी हो सकती है, तो वह अब वैरी पर्सन विल ऑलवेज, वैरी से जनरली आपको लड़ाई झगड़े याद आता है, ठीक है, इज वैरी ऑफ हिम। नो, वैरी मीन्स समवन हु इज वेरी डाउटफुल ऑफ द कमिंग सिचुएशन एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केप्टिकल, ठीक है, वो स्केप्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है, वो काफी केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं, विजिलेंट होते हैं, ठीक है, दे विल बी वेरी कॉशियस अबाउट द गोइंग थिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, वैरी कहते हैं। आई बात समझ में, समवन हु इज कॉशियस, विजिलेंट, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या था? स्केप्टिकल हमने टोन में भी पढ़ा है, जल्दी से बताओ तो व्हाट इज स्केप्टिकल टोन? कम ऑन फास्ट, स्केप्टिकल हमने टोन में भी पढ़ा है, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केप्टिकल। स्केप्टिकल टोन क्या होता है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टोन वाले सेशन में भी कराया था मैंने स्केप्टिकल। कम ऑन। स्केप्टिकल इज बीइंग डाउटफुल ऑफ पीपल, करेक्ट। फीलिंग और शोइंग द नेचर ऑफ केयरिंग, बिल्कुल भी नहीं, स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल ऑफ सिचुएशन, राइट, क्लियर, सिनिकल होना है ना, विजिलेंट होना, कॉशियस होना। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? टू ट्रस्ट समवन, टू बी केयरलेस, अनसस्पेक्टिंग। क्योंकि आप केयरलेस कहने का मतलब, अगर आप केयरलेस हो तो आप बार बार डाउट नहीं करो, तो कॉशियस नहीं हो, यू आर डूइंग थिंग्स वेरी नाइसली, आप एकदम केयर फ्री होके काम करोगे, राइट। सो द सेंटेंस हियर इज, द वेरी इलेक्टोरेट शोड सम स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स promises of immediate change. Clear? Next word we did today was disenchanted, which meant disillusioned, dissatisfied, disappointed with anything. Antonyms can be a very good word, that is enthralled, content, प्लीज, जब आप खुद में बहुत सेटिस्फाइड हो, यू आर वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक, ठीक है, आप बहुत खुश हो, कंटेंटेड इन योर सेल्फ, देन यू आर नॉट बीइंग डिसएंचेंटेड, एकदम अपोजिट ऑफ डिसएंचेंटेड इज enthralled, contented, pleased in yourself, okay, ठीक है। सो सेंटेंस में आ जाता है, मेनी सिटीजन्स फेल्ट डिसएंचेंटेड विद द लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टेटहुड। नहीं बेटा प्रिया, फीलिंग और शोइंग द नेचर ऑफ केयरिंग भी नहीं होता है। वेरी आप बेसिकली बोलोगे when you are being cautious about things that are going to happen, and that's why you're taking every step बहुत cautiously, बहुत skeptically, बहुत vigilantly, मतलब आप फ्यूचर को, एस्पेक्ट को देखते हुए चीजों को कर रहे हो, ओके ओके।
सो केयरिंग एक पॉइंट पे सही है बट नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब ये फॉर्मर, प्रीवियस, वन टाइम, जो प्रीवियसली थे, ओके। एंटोनिम्स हो जाएंगे करंट, प्रेजेंट और अनगोइंग। लाइक द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट इज स्पेशल स्टेटस आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन। अर्स्टवाइल इज फॉर्मर, क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मीन्स डिवाइडेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब ही होता है डिवाइडेड। फ्रेगमेंटेड इन व्हाट टर्म्स, यहाँ पे भी यूज हुआ था ना फ्रेगमेंटेड, right? Fragmented was used in the paragraph also in terms of to break into small pieces. Yes, Palak, caring can be complacent, correct. Fragmented means to obviously, ऐसे अगर literal meaning के साथ जाओगे तो to break something into small pieces is called as fragmented. So dividing something, splintered, disjointed, अलग अलग करना, separate करना, okay, that is fragmented. Antonyms क्या हो जाएंगे? United, cohesive या फिर consolidated. Okay, united, cohesive या फिर consolidated. So the sentence would be the fragmented party system in the valley pose a challenge for any party aiming for a clear majority. Fragmented means बहुत divided है वहां की party system. So because they are not very together, तो इसीलिए नहीं बोल सकते हो कि उनके लिए elections में participate करना भी बहुत easy हो जाए. Because इतने डिवाइडेड है, छोटी 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 पार्टी, तो वोट भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट मीन्स टू स्ट्रेंथन, यूनाइट और कंबाइन समथिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे वीकेन करना, डिवाइड करना और डिस्पर्स करना। मैम स्केप्टिकल मीनिंग, स्केप्टिकल का मतलब बीइंग डाउटफुल अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्केप्टिकल इंसान बहुत डाउटफुल होता है, अंडरस्टूड, ही वुड डाउट ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ठीक है। स्केप्टिकल होना, सिनिकल होना, सिमिलर। टोन में भी ये टोन बहुत बार आता है, स्केप्टिकल। व्हेन यू आर डाउटफुल अबाउट द इंटेंशंस, अबाउट द डूइंग्स ऑफ एनीथिंग, दैट इज स्केप्टिकल, ओके। So the BJP sought to be consolidate its base in Jammu and Kashmir to secure a large share of the vote. Clear? Next word is delimitation. It is again, ma'am, is word power made easy. Book is helpful for vocabulary. Yes, it's a very good book, and it's very much helpful. Amazon, Flipkart है, बहुत easily readily available होते हैं. You can get it, and काफी ज्यादा helpful book है. Means it is good only. अगर आपको vocabulary के लिए बहुत basic से शुरू करना है, that is going to help you. Okay. पेसिमिस्टिक हाँ बोल सकते हो, बट पेसिमिस्ट द टोन स्केप्टिकल इज नेगेटिव ओनली, ठीक है। तो पेसिमिस्टिक उसका मीनिंग डिराइव नहीं होता है, बिकॉज डाउटफुल होना और पेसिमिस्टिक होना इज थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। बट हाँ नेगेटिव टोन में जाता है, इसलिए पेसिमिस्टिक एंड डाउट स्केप्टिकल साथ में जाते हैं, ओके। डिलिमिटेशन का मतलब है व्हाट, व्हेन यू आर डिलिमिटिंग समथिंग, यू बाउंड्री सेटिंग, ऑब्वियसली, ठीक है। आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो चीजें हो चुकी है उसको वापस से आप कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट, मे बी आप नया कुछ शुरू करना चाहते हो, या फिर आप लिमिट सेट करना चाहते हो, बाउंड्री सेट करना चाहते हो, इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, न्यू मेंबर्स ला रहे हो, चीजें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर इन डीलिमिटेशन, ओके। रीडिस्ट्रीब्यूशन, बाउंड्री सेटिंग, रीऑर्गेनाइजेशन। एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबलाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी या फिर सेमनेस। क्लियर है? लाइक सेंटेंस सेज the delimitation exercise was aimed at restructuring constituencies to reflect population changes. Clear? नेक्स्ट, डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने पूरी बुक कर दी थी वर्ड पार की सेट में, मैंने इट्स रियली गुड एंड हेल्पफुल। यस मैम, जब आपने पढ़ाया था तब तो लिखा था उसने पेसिमिस्टिक एंड स्केप्टिकल, यस करेक्ट। करेक्ट अनन्या, इसलिए तो मैंने कहा वो बिल्कुल नेगेटिव टोन है, इसलिए पेसिमिज्म आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड्स, last three words, that is imperative, again very important. Imperative is something which is very important, necessary, essential, crucial, ठीक है। antonyms क्या हो जाएंगे, optional है, unnecessary है, non essential है। like addressing autonomy concerns has become imperative for peace in region. so imperative word is very commonly used. याद रखो imperative का मतलब क्या होता है, essential होना, crucial होना, necessary होना, ठीक है। palpable, many times seen in CLAT passages also, और न्यूज़पेपर्स में तो रहता ही है। tangible, noticeable, evident, palpable can be something which can be easily seen, सामने से बहुत clearly visible, ठीक है। antonyms हो जाएगा imperceptible, intangible, invisible, clear है। like the palpable disenchantment among the population was hard to ignore, clear। Next comes fiat.
हाँ बस I'll now suggest if you are going to appear for CLAT 2025 and now at this time you are feeling to start with any novel या फिर वो 30 days to a more powerful vocabulary होगी तो I won't suggest it to be a yes. उससे better होगा कि आप mocks read करो, Aeon essays read करो, economic forum पढ़ो, ठीक है. That would be more helpful because वो ज़्यादा CLAT से content related होगा और आपके पास time कम है. So now getting and engaging into a book won't be a very good idea. Okay, that's my suggestion. Fiat is decree, edict or order released by something. ठीक है. तो डिक्री, देखो डिक्री देना मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो. फिएट का मतलब होता है आप ऑर्डर कर रहे हो. और एंटोनिम हो जाएगा इसका जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपील कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, प्लीज डू दिस. ठीक है. लाइक डिसीजन इम्पोज बाय फिएट रेयरली लीड टू लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस इन गवर्नेंस. क्लियर है. ठीक है. फिएट का मतलब समझ में आ गया. एम आई क्लियर? आई होप दिस सेशन was helpful and लास्ट के जितने भी वर्ड्स मैंने आज आप लोगों को याद कर रहे हैं you will be revising it before going to the bed today. Okay, सोने से पहले आप उसे रिवाइज जरूर करके सोओगे. अंडरस्टूड? राइट? Okay, so with this we have done with the vocabulary session, and do let me know in the comment section if you want these vocabulary roundup sessions later on in the coming months, and if this was helpful for you all to get the vocabularies together. Okay, chalo, till then, take care, bye bye, happy Vijayadashmi to everyone, good day.